Predecessors as presidents of UCCI, award nominees, members, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to welcome everybody here today for our 59th foundation year. Particularly Shri Gopalji Kapra, who comes from the electrical industry, and you've heard some his background is just amazing. To a 30-year journey, 30 साल में जो इन्होंने किया है वो कम एंटरप्रेन्योर्स कर पाते हैं। 90-95 देशों में अपने प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस और पहचान, एंड इज अ बिग वन फॉर ब्रांडिंग, बनाना और 30 साल के छोटे दायरे में आसान नहीं है। छोटे से धंधे से 300 किलो वाइंडिंग वायर महीने के बनाने से 15,000 करोड़ का सेल्स टर्नओवर, जिसमें से 2,500 करोड़ भारत के बाहर है, आसान नहीं है। ये तो इनके बिजनेस अचीवमेंट्स हो गए, लेकिन जो आपने फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस के साथ काम किया है, पर्टिकुलरली जो इनकी थीम है सस्टेनेबल सक्सेशन प्लानिंग, वो एक अपने आप में यूनिक चीज है। तो आज श्री गोपाल जी हमारे कहने पर उदयपुर आए, बहुत बहुत हम आभारी हैं सर फॉर योर काइंड प्रेजेंस, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस हियर विल ट्रूली अप्रिशिएट hearing from you about your experiences. I also welcome all the award applicants and finalists who are here today. The Excellence Awards, and Manish will explain this in greater detail. एक ये UCCI की मुहिम है जिसमें हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री एक दूसरे से सीखे, पर्टिकुलरली एक्सेलेंस क्या है, कैसे पाई जाती है और कैसे आगे बढ़ती है। तो इसमें विनर्स और लूजर्स नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी विन्स, बिकॉज एवरीबॉडी रिसीव्स सम फीडबैक ऑन व्हाट वाज गुड, where they need to improve. So overall, it's one of those fantastic initiatives where every applicant gets some useful feedback from you. So I welcome all of you. I also welcome all the members of the executive of the UCCI, all our past presidents, all our other members to this. And I shouldn't forget the media. The media is also here, and I welcome them very much. Today is about celebrating our 59th foundation day. So as an institution, we go back 65 years. 59 years, started in 1965. उस समय से अब तक की जो जर्नी है हमारी, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, और छोटे से अलग अलग लोगों के ऑफिसेज में ये संस्था चलती थी, तब से जो आज हमारा एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज अ टेस्टिमनी टू ऑल द पीपल बिफोर मी हु हैव लेड दिस इंस्टीट्यूशन एंड हैव ग्रोन इट. आई हैव बीन लकी टू इनहेरिट सच अ फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर. But ultimately, the infrastructure is less than the sum of the parts which are our members. So given that 65, almost 70% of our membership comes from the MSME sector, we are very much focused on doing work to help the MSME sector, and I'll talk about it a little bit more. But 60s में, 70s में, 80s में जब सारी इकोनॉमी पूरी तरह से सरकार के लाइसेंसिंग के और इन सब चीज़ों के बीच में बंधी हुई थी, तो इस चेंबर का काम बेसिकली गवर्नमेंट एडवोकेसी था कि सरकार में ये पॉलिसी बदलवा दें, वो पॉलिसी बदलवा दें, सीमेंट एलोकेशन 10 बोरी से ज्यादा इंडस्ट्री को मिल सके, ये वो जमाने भी थे. तो वो जमाने देखते देखते अब विद द 91 रिफॉर्म्स एंड देन सब्सिक्वेंट मोर एंड मोर रिफॉर्म्स दैट हैव हैपनिंग, तो इंडस्ट्री अब काफी फ्रीडम महसूस कर रही है. तो अब यूसीसीआई का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट एडवोकेसी का जहां तक ताल्लुक है, आप सरकार को नई पॉलिसीज के बारे में या जो डिफेक्टिव पॉलिसीज के बारे में आप उनको एजुकेट करते रहिए, चेंज की कोई गारंटी नहीं. तो these days the focus on UCCI needs to be more and more about enabling entrepreneurs to grow. क्योंकि yes, ease of doing business particularly भारत सरकार ने बहुत आसान कर दी है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से अभी भी हमेशा रोड़े रहते हैं, and this is a national problem. Ease of doing business with state authorities is much harder compared to central government. So today our focus has to be on trying to, in terms of government advocacy, at least raising the issues of ease of doing business. Whether we get results or not, who knows? हम लॉबी कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपनी तरीके से काम करती है. There are a lot of interests, and some of the regulations which we face within industry, we need to be brave enough to admit कि हमारे ही कारनामों की वजह से इस तरह के रेगुलेशन आए. If we were conscious, if we were ethical, if we were environmentally conscious, a lot of these regulations would not be needed. So that is a responsibility which we have as an industry. उदयपुर को अगर आप देखो, दक्षिण राजस्थान को अगर आप देखो, तो it has a phenomenal potential for business growth. Natural resources इस डिवीजन में, इस संभाग में बहुत है.
टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इस संभाग में बहुत है। तो ये तो दो उदयपुर के नेचुरल स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन इसके अलावा उदयपुर इज नाउ होम टू अ मेजर IT इंडस्ट्री. Who could imagine 15 years ago, 20 years ago, whoever was in this chamber leading it, that IT developments could happen here? But they are. My understanding is that Udaipur now employs something like 25 or 30,000 people in the IT and the ITES businesses. Udaipur ka industrial environment बहुत बढ़िया है. Labor trouble is now a part of history. जो इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सिवाय जमीन के सब है. और सबसे बड़ी बात उदयपुर की है वो है कि उदयपुर की एंटरप्रेन्योरशिप इज सेकंड टू नन. वी हैव ए फैंटास्टिक कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स who are doing some great, absolutely phenomenal work all over the world. So, as UCCI, what is our job? Our job is to, yes, okay, work on ease of doing business, but primarily to open the minds of other entrepreneurs. And that is where the excellence awards come in. How different companies have achieved excellence and how other companies can learn from them and achieve excellence. UCCI का एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. श्री गोपाल जी मुझे आते आते ही कह रहे थे भैया बड़ी जोरदार फैसिलिटी है. बिल्कुल है सर, और मेरे प्रेडिसेसर्स ने बनाई है, बड़ी मेहनत करी है इसको बनाने में. लेकिन दो तीन बड़ी यूनिक चीजें कर रहे हैं. एक तो by the generous donation of Shri Bhatna Sahab, we're running a vocational training center. And that vocational training center is now deeply engaged with training people within the mining industry and the hospitality industry. So the last course which we announced for mining, we had 30 seats available. We got 170 registrations. So that is something which I'm sure Bhatna Sahab gets a lot of sukoon from. काफी दिनों से कोशिश थी कि हम ऐसे कोर्सेज चलाएं, तो फाइनली वी सीम टू गेट द राइट फॉर्मूला. और MHBTC हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी कई कोर्सेज कर चुके, और अब माइनिंग का भी काम शुरू हो गया. वी गॉट रजिस्ट्रेशन विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल. वी गॉट रजिस्ट्रेशन विद द माइनिंग साइड इन द स्किल डेवलपमेंट विंग ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज. सो और ये कोई और एसोसिएशन करता नहीं. तो मैं चाहूंगा एवरीबडी आई थिंक नीड्स टू कांग्रेचुलेट बापना साहब for this great effort and for this great effort to now see the signs of success. The other thing which we do, which is again amazing, is that for the whole of Rajasthan, we run the only hazardous waste disposal facility. Now, hazardous waste disposal is a problem for all industries. Even if you are an automobile service center, you still have to dispose of hazardous waste like oils and greases and things like that. And the hazardous waste facility, which on behalf of the Pollution Control Board, is today disposing of 60,000 tons of waste per year. Now that is no joke. That is a huge work. And waste is received from Alwar, Kota, Ganganagar, Bikaner, and of course the neighboring places, with something like 1,400 contributors. So it's a unique facility, and we're blessed with the opportunity to be able to run it. And so for these two things, 2 years ago, we formed standing committees, and they are managing these two jobs extremely well. Recently, with the launch of UCCI's website and its back-end IT infrastructure, the big change that is happening in UCCI is that all services delivered by UCCI will now be available digitally. This whole process of digitization definitely needs greater involvement from all of the membership. And our back-end work is now much reduced, because all the transactions are coming in through electronic route. We don't need reconciliations. We have exactly the right figures. There is a single source of truth, which is the data in our IT systems. But what we need now is greater involvement of the membership. And to that end, first and foremost, I'd like to say for the micro and small industries, we have this phenomenal feature in our on our website called the UCCI Marketplace. So if you as a business cannot afford a website, use the UCCI Marketplace to advertise your products to the world. Interestingly, if somebody Googles Chamber of Commerce and Industry today, UCCI shows up as the 5th.
and in a few days, I expect it will rise to the second or the third. So that's the kind of effort which we are making. So, to that end, to that digital end, from March से हम एक मुहिम शुरू करेंगे जिसमें कि इस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल किया जाए, हाउ यू कैन डिराइव द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम इट, इसके बारे में जानकारी होगी। और जो हमारी धीरे धीरे जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बन रही है उसमें वीडियोस के जरिए हाउ यू कैन एंगेज विद यूसीसीआई ऑन डिजिटल बेसिस, वो उसके बारे में जानकारी होगी। सो आई अर्ज यू ऑल टू प्लीज पार्टिसिपेट एटलीस्ट इन बिल्डिंग द मार्केट प्लेस। सो दुनिया को ये तो पता लगे कि यूसीसीआई में कितने बिजनेसेस एसोसिएटेड हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी इस एक्सेलेंस अवार्ड्स के एप्लीकेट्स में मुझे पता पड़ा उदयपुर में लिफ्ट्स भी बन रही हैं। I wasn't aware that there is a phenomenal business which is in the area of providing information on chemicals. They don't sell chemicals, but they sell information about chemicals. Now these are very, very innovative things that are happening in town, and even we don't know it. So इस रास्ते से कम एक विजिबिलिटी जो काम हो रहा है उसकी आएगी। यूसीसीआई का मेन काम यही है कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग किसी तरह से अपना धंधा बढ़ाने में आगे बढ़े। And you're all familiar with my thesis that if 10% of micros move to small, 10% of smalls move to medium, and 10% of medium move to large, Udaipur's GDP growth will be 20% a year. When India is planning 7, we would be growing at 3 times the pace. तो इसमें बाधाएं क्या है? What is the basic barrier to getting micro and small, particularly entrepreneurs, to grow? And that barrier is very much in the mind of the entrepreneur himself. श्री गोपाल जी की जो कहानी है वो छोटे से बड़ा और बहुत बड़ा कैसे होते हैं, और 30 साल में ऐसे उदयपुर में 5 एंटरप्रेन्योर चाहिए, and the world changes, and the whole world changes. So in order to reach that goal and open people's minds, UCCI has been running some very interesting initiatives, learn from each other. तो जो हमारे यहाँ की सक्सेस स्टोरीज हैं वो पैनल डिस्कशंस के रूप में, इंटरेक्शंस के रूप में कई सारी होती रहती है। इसी तरह से जब एक्सेलेंस अवार्ड्स की बात आई तो वी हैड सेशंस ऑन व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशंस इन एक्सेलेंस। तो जो प्रीवियस एक्सेलेंस अवार्ड्स के विनर्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमने हमारे धंधे को कैसे सुधारा। तो इससे और कुछ नहीं, एक एक्सपोजर मिलता है, एक आइडियाज मिलते हैं, और इसके साथ साथ फिर एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जिनसे कि एक्सपोजर मिलता है। तो लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स एक अपने आप कार्यक्रम है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, this program that we're now running called Our Factory Day, and a number of our members have opened up their plants to the UCCI innovation. इसका फायदा यह है कि you can actually see excellence in action. एक तो ये है कि आपने लेक्चर रूम में बैठ करके किसी से सुना, एक ये है कि आपने जा करके खुद देखा, और देखने के साथ साथ बड़ा इंटरेक्टिव भी है because you are talking to the entrepreneur, उन्होंने कैसे किया, उनको क्या डिफिकल्टीज आई, ये भी एक सीखने का मौका मिलता है। So it's one of those opportunities which is available to all our members, and in fact even to non-members, honestly. Because while yes, our membership is our primary focus, but growing business in Udaipur is far more important. So with these initiatives, we're moving forward at a time when the business environment in India is so conducive. धंधा बढ़ाने के लिए इससे बेहतर समय कभी भारत के इतिहास में नहीं था, भारत के रिसेंट इतिहास में 1000 साल पहले था, आज दोबारा है। Everything about India and its economy is favorable. Internationally, we're a well-established brand. Previously, India was not thought of as, in fact, India as a brand was considered poor. We're now a well-established brand. There is a lot of investment happening all over the place, particularly public sector investment. Infrastructure is growing at a pace which we honestly cannot believe. At least in my lifetime, I've never seen it as fast as it is now. And by infrastructure, it's not just roads, but ports and airports and digital infrastructure and so on and so forth. Who would imagine that India could roll out 5G without foreign assistance? But we've done that. और ये संभव इसीलिए है कि इस समय भारत के अंदर बिजनेस ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी। So there's never been a better time, particularly for MSME. There has never been a better time also. मतलब भारत के लिए भी अब बहुत अच्छा समय, MSME के लिए भी बहुत ही अच्छा समय।
क्योंकि एमएसएमई को सारी सरकारों की प्राथमिकता है, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार, सेंटर की सरकार हो। बिकॉज फाइनली ये सरकार को समझ में आ गया कि अगर भारत में प्रगति होनी है तो बगैर इस इंजन के, एमएसएमई के इंजन के नहीं हो सकती। बड़े बड़े बिजनेसेस ग्रो होकर के एक लिमिट तक आएंगे, लेकिन छोटे बिजनेसेस बहुत एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये मौका है, और ऐसा मौका दोबारा आए ना आए ये मैं कह नहीं सकता, बट दिस इज द टाइम टू रियली इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, रियली इन्वेस्ट इन एक्सलेंस एंड use your powers of innovation, use your powers of entrepreneurship, use your sharp customer focus, use great ethical business practices and grow. Growth today really has to be in spite of the government and not because of the government. It is down to us entrepreneurs to take this opportunity and run with it. And Rishi Gopalji here, I'm sure his story will probably spark some ideas in our minds, and we can also go on that growth journey. So Shri Gopalji, I hope you can inspire us and our audience. Thank you very much.